तो चलो बॉटम लाइन कुछ ऐसी है समरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिवॉल्यूशनरी ना तो वो एक लॉ का प्रोडक्ट, लॉ कौन सा है? इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो हमारे सारे काम होते हैं किसको करके, क्या पास करके? लॉ पास करके। लेकिन लॉ का कोई एक टाइप नहीं है, बहुत सारे टाइप हैं, और क्योंकि बहुत सारे टाइप हैं इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लॉ बनाते हैं। और हमारे देश में पार्लियामेंट से ज्यादा लॉ बनाता है कौन? एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिफाइन नहीं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी एंड द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझे सिस्टम? दूसरी बात, हमारे देश में दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वन इज फेडरलिज्म, अदर वन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑन डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, दो अलग अलग प्रिंसिपल हैं जो अलग अलग देश एडॉप्ट करके चलते हैं, लेकिन हमारे देश में दोनों को रिकंसाइल किया गया है। और रिकंसाइल करने के लिए हमने ज्यादा पावर किसको दी है? यूनियन को, यूनियन एग्जीक्यूटिव को, एज कंपेयर टू विच वन? स्टेट। इस पर हम आगे बात करेंगे, वो धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। विद ऑल द फीचर्स नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव टू बी यूनियन। जैसे हम लोग यूनियन कवर करेंगे फिर हम आएंगे किस पर? स्टेट पर। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड तैयार है पूरा का पूरा? कोई समस्या? ठीक है, चालू करें। चलिए, एक टाइटल लिखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव का कुछ भी आए, ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल लिख के आ जाना, आप लोग चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। यूनियन एग्जीक्यूटिव, चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, separation of power reflect the nature function, principle of separation of power reflect the nature function, reflect the nature function and jurisdiction of, jurisdiction मतलब authority, nature function and jurisdiction of three organs of the government and jurisdiction of three organs of the government. In this regard, legislature is associated. In this regard, legislature is associated with the will of the people. Will मतलब इच्छा. Associated with the will of the people. Will of the people, comma. Judiciary act as a custodial of the constitution. Judiciary act as a custodial of the constitution. Custodial of the constitution. And executive is created. And executive is created for the reason of state. ये एक term use होता है. Executive is created for the reason of state. अब सुनो जरा. रीजन ऑफ स्टेट, अच्छा स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 पढ़ा है, आर्टिकल 12 आप लोगों ने, पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अच्छा, स्टेट का मेन काम होता है गवर्नेंस करना, और गवर्नेंस करने के लिए हमारे पास एक बॉडी, बॉडी का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव गवर्न करेगी, रेगुलेट करेगी और क्या करेगी? लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव टू गवर्न द स्टेट फॉर द रीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, in Indian constitutional framework and parliamentary practices, constitutional framework and parliamentary practices, a more flexible model of separation of power, a more flexible model of separation of power, flexible model of separation of power, flexible model of separation of power has been adopted between executive and legislature, has been adopted between executive and legislature, comma karna, where executive and legislature, where the evolution of executive takes place from legislature, ये पढ़ा है आप लोगों ने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, takes place from legislature and
An executive is also responsible to legislature. An executive is also responsible to legislature. Also responsible to legislature. ठीक है? Clear? Paragraph change. Under Indian Constitution, executive is directly and prudently involved in law formulation function. Full stop. There are so many categories of laws like, ऐसा कर लो, categories of laws mentioned under Article 13 like, या such as, categories of laws mentioned under Article 13, 1-3, Article 13 such as ordinances, rules, regulation, कॉमा करके लिखते जाना, ordinances, rules, regulation, orders, notification, etc. are either proclaimed by, proclaimed मतलब issued by, are either proclaimed by or formulated by, executive, ठीक है, formulated by executive. It means, continue करो, it means more than legislature, it is the executive. It means more than legislature, it is the executive. Legislature, it is the executive. It is the executive which is involved in the process of law formulation. ठीक है? Law formulation. Continue करना इसी पैराग्राफ में. It should be noted that law formulation. It should be noted that executive authority. It should be noted that executive authority is nowhere defined in any provision of the Constitution. Nowhere defined in any provision of the Constitution. Full stop. Basically all the residual मतलब बची हुई, basically all the residual, RESIDUAL, all the residual functions and powers, which are not exercised by legislature and judiciary, are operationalized by executive. ठीक है? In our country a constitutional framework, जो भी लिखना चाहो, in Indian constitutional framework, इसको मैं आगे प्रूव करूंगा आगे जाके. In Indian constitutional framework, इन्वर्टेड करोगे, executive can do anything. In Indian constitutional framework, executive can do anything. And anything is almost equivalent to
anything, and anything is almost equivalent to क्या? Is almost equivalent to everything. Almost equivalent to everything. ठीक है, full stop, everything. Since the formation or creation of executive has been done, since the formation of executive has been done on the principle of, popular sovereignty, on the principle of popular sovereignty, comma karna, where the main source of constitution, popular sovereignty, where the main source of constitution, popular sovereignty, where the main source of constitution is nothing but, inverted, we the people of India. Constitution is nothing but we the people of India, full stop. ठीक हुआ? We the people of India. मेरे ख्याल सिस्टम समझे आप लोग यहां तक? We the people of India.